वेलकम मिनासांग कोनिचिवा। मैं राहुल और मेरे चैनल जापानीज लैंग्वेज ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दिस वीडियो इज आफ्टर टू लॉन्ग टाइम। 2022 जुलाई में JLPT की एग्ज़ाम हो गई थी। वंस अगेन ट्राइड N3 एंड लास्ट वीक आई गॉट रिजल्ट ऑफ इट। आई गॉट मार्क्स 163 आउट ऑफ 180। लिसनिंग आई गॉट 60 आउट ऑफ 60। vocabulary and grammar I got 60 out of 60. In reading 40 out of 60. From this exam, I analyze how to study for the JLPT, how can pass the JLPT, and for that I identified the 6 steps that we will see in this today's video. Okay, let's start today's video. And the first point is learn katakana and hiragana. Learn how to write and pronounce the hiragana and katakana. This is most important base for the Japanese language. Same as the English alphabets. After the learning hiragana and katakana, we can read the Japanese vocabulary. Please refer to my channel playlist for the katakana and hiragana. You guys learn from that how to write, pronounce, and when we can use the katakana and hiragana. Second one is learn kanji. Simply we can say this is one more additional alphabet. काताकाना, हिरागाना प्लस कांजी. कांजी एक चित्रलिपि है. हम उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि जैसे की कांजी देखेंगे तो ट्री की तरह दिखती है. कांजी इज द ब्लॉक. इफ वी एडिंग द कांजी देन वी गेट द डिफरेंट कांजी फ्रॉम दैट. N5, N4, N3 have a different set of kanji. Try to write kanji. आप जितना कांजी लिखेंगे उतना ही उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. कांजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. यू गाइज लर्न कांजी फ्रॉम माई वीडियोज एंड आई मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज फॉर दैट. Third one is learn and extend more vocabulary by listening. This is a very important point. Learn vocabulary through listening. If we learn vocabulary through listening, then simultaneously we can do the practice of listening and pronunciation. मैं अभी तक ऐसे ही करते आया हूँ. एक साथ दोनों चीज़ होने से टाइम भी बचता है. We can use for that my videos or YouTube videos. Vocabulary is the base for any language. To read vocabulary, must katakana and hiragana is we have to important. Fourth is learn grammar. This is also important section. This is time taking when we go through books and making us nervous to do study of Japanese language. बहुत सारे लोग उसके वजह से जापानीज लैंग्वेज लर्न करना भी छोड़ देते हैं. आई एम नॉट गिविंग मच टाइम टू लर्न ग्रामर, बट सेम एज vocabulary आई एम लर्निंग इट by listening. Do one thing, only repetitively listen the sentence pattern till you habituate. Then आपको कुछ तो जापानीज ग्रामर हम सीखे ऐसा लगेगा. Fifth one is learn reading. Reading section is a totally depend on point 1, 2, 3, 4. Means hiragana, katakana, kanji, vocabulary, grammar. In my case, I did reading section study by vocabulary and grammar. मैंने तो कभी रीडिंग के लिए सेपरेट स्टडी नहीं किया. So important, do vocabulary and grammar study properly. Means grammar patterns study do properly. 6 is learn listening. This is very important section. You know why? Because in every JLPT exam N5 to N1 you require to separate passing for this section. But जैसे कि मैंने कहा हम vocabulary and grammar की प्रैक्टिस listening से करेंगे तो listening एक easy section बन जाएगा आपको. In listening, pronunciation is most important when we have to give more attention for that. This is the most important 6 steps for the Japanese language. एडिशनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो इन विच N1 लेवल, विच जापानीज लेवल
how much score required for that, or section wise passing is how much required. That for that I am giving one additional description for that. Thanks all of you. Now onwards I am trying to give you continuous videos for you. Please subscribe, watch and share my videos. Thank you. Like, share and subscribe. Bye bye.